Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to our 1 month special show called the Election Radar, where in each episode we reach a destination and then give you an analysis. Of course, today was phase 2 and Rampur was the battle royale. But first, let us take you through this journey. How have we reached here? Crisscrossing the state of Uttar Pradesh. We started from Greater Noida, went to Aligarh, then to Saharanpur, Deoband, Muzaffarnagar, Rampur, Bareilly. In Rampur there is a place called Swar, then Shahjahanpur, then Kasganj, and now back in Rampur. This journey will continue through all the phases of elections, right till the very end, the 7th of March. So on this show tonight, two things that we are looking at. Number one, the battle royale in Uttar Pradesh in phase 2. A very, very critical election. 55 constituencies, 9 districts. In all, half of the halfway mark is already done. More than half actually. Who's winning? Who's losing? What's the buzz on the ground? And what is Rampur thinking? This is a very, very important seat and a prestige issue for Azam Khan. We're going to track all the latest details and something very important that the Prime Minister mentioned. We'll get to that in a bit. Also on the show, from the mountains to the sea, today was also an election Valentine's Day for Uttarakhand and Goa. How did these two states vote? What happened there? We'll get you all the latest. But first, let's take a look at this presentation from Battleground Rampur and also the 55 constituencies of Uttar Pradesh. After today, polling is over in a quarter of UP's constituencies. And today's 55 are in a belt seen as a Samajwadi stronghold. Last time the party won 15 of its 47 seats here, despite a dismal performance elsewhere. Many of the districts that saw polling today have a sizable Muslim population. And the SP-RLD alliance is hoping to retain that vote and draw in votes from scheduled castes and non-Yadav OBC communities too. Also in the mix is the Congress that won 2 of the 55 seats last time. The big battle is in Rampur. Jailed Lok Sabha MP and Samajwadi Party leader Azam Khan against the BJP's Akash Saxena and the ex-royal Nawab Qasim Ali from the Congress. The Nawab feels that 9-time MLA Azam Khan will get no sympathy for being in jail. आपको क्या लगता है as a person in the political prisoner and no government has sent him to jail. He's committed a crime, so he has to face the consequences. It's also interesting that the Nawab's own son, Haider Ali, is an NDA candidate from a nearby assembly segment called Suar, again with a sizable Muslim population. He is up against Azam Khan's son, Abdullah Azam. The BJP feels that not Hindus, but even Muslims will vote for them on law and order. बलवाइयों का, बाहुबलियों का और बकैतों का ब्रदरहुड था और ये जो है बलवाइयों, बाहुबलियों और बकैतों का जो 3B ब्रदरहुड था। इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी है, सब लोगों को आपने लपेटा है। अब इसमें जो है 3B बिड में तो जो पिछली 5 साल पहले जो सरकार थी उसमें तो उन्होंने हाईजेक कर रखा था। अब योगी जी ने आके 3B ब्रदरहुड का बंटाधार किया। But makers of the Rampuri Chhuri or dagger reveal a larger economic crisis faced by several sections here. मेरी सोच ये है कि हम बनाते तो हैं और इसको बेचने वाले जो हैं वो हिंदू हैं। बाहर से जो लोग आते हैं वो हिंदू बिरादरी के होते हैं। मेरा एक का काम बंद है, उन 20 आदमियों का काम बंद है। अगर मैं इसको एक आदमी बनाऊंगा तो 20 आदमी लेके जाऊंगा। नहीं, लेकिन ये कब से बंद हुआ? क्या इसी जो मौजूदा सरकार है इसमें बंद हुआ या बहुत जमाने से ऐसा हो रहा है? ये 15 साल से है, लगभग इस पे 15 साल से बैंड है। In second phase of Uttar Pradesh, Muslim population is significant. In Muradabad, Muslim votes are above 45%. In Bijnor, above 41%. And in Bareilly also, which is stronghold of BJP, Muslim votes are above 25%. Chief Minister Adityanath in an early morning interview brought up his controversial 80-20 comment again.
but denied it was targeted against any one community. भाई मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मौत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। An important vote in the Shahjahanpur district too, one of UP's major paddy producing areas, where 5 of 6 Vidhan Sabha seats are with the BJP. The biggest battle here on the southern or town seat, where 8-time MLA and UP Finance Minister Suresh Khanna is aiming for a 9th straight victory. Up against him, the Samajwadi Party's Tanveer Khan. विकास के मुद्दे हैं। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार जब 2012 से 17 तक थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक काम किए, विकास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर नहीं, बल्कि धर्म जाति के नाम पर पूरी तरह से जनता को गुमराह कर जो है वोट हासिल करना चाहती है। हमारा सिर्फ विकास विकास और सिर्फ विकास ही एजेंडा है। Like I said, there are long queues here. Male voters also, female voters in different queues and all of them. अच्छा, किस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है आपका? हमारी बीएससी है। बीएससी फर्स्ट ईयर है। तो नौकरी यहीं करना चाहते हैं? आपको लगता है बाहर जाना पड़ेगा? अपनी स्टेट में करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके स्टेट में अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त? जी अभी तो नहीं है, इस सरकार में तो नहीं मिली है। नहीं है आपके हिसाब से? नहीं। Voting will resume in UP after a 6-day gap. With Saurabh Shukla, Sanket Upadhyay and camera person Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV. So as you saw, that very comprehensive understanding of why phase number 2 was so important. Where I'm standing, Rampur, the Muslim population here is 58%, Hindus 42%. And yet there is khichdi voting that happens. To safely assume that Muslims will vote for Azam Khan and Hindus for the BJP's Akash Saxena is a dangerous assumption to make. That does not happen in Rampur. The same trend in other constituencies as well, which is why this is a complicated state and this is a complicated election. Now, the Prime Minister said something very interesting, just speaking of that khichdi electorate. He said that Muslim women, he's very confident that Muslim women are actually voting for the BJP. Let's listen into what he said. मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। Okay, now let's also make you listen to what the Muslim women in Rampur, and I'm just adding a rider, these are some women that I spoke to, they may not be representative of all women of Rampur. This is what they had to say. तो इस वक्त हम रामपुर में हैं और रामपुर की महिलाओं के मन में क्या है, वो किस तरीके से वोट डालेंगे, आइए उनसे पूछते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राबिया जी। राबिया जी, क्या मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा यही है कि महंगाई बेइंतहाई है, रोजगारी बेरोजगारी है, कमाइयाँ इतनी है नहीं, बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी, हर चीज की परेशानी। हम किस किस चीज की परेशानियों को रोएं और उसको भुगते हैं, ये मुद्दा है हमारा। First of all, your name? Sir, myself is Farha Khan. Okay. What do you think about the core issues? What came to your mind when you went to the polling station? So the biggest issue the biggest issue is the unemployment here in Rampur. We are looking forward for a change, sir, actually. This time, see, we are going to rise above all these kind of barriers like casteism, creed. See, this is not the issue actually. The women, especially the females of Rampur, they want jobs. Sir, we had been applying for numerous jobs, but the thing is that every time it is unfair. See, most of you even if you just pick up a number of jobs, you'll find that most of them stuck at the court. We had been fighting there. I myself had been the candidature of 69,000 vacancies, sir. You have already seen what had happened in Eco Garden, what had happened at different places. The youth had been beaten brutally. Is it a Ram Rajya?
Are we looking forward for such an India? In the past also unemployment has existed. So how is it such a big issue for you on the basis of these last 5 years? Do you think it has increased or what has gone wrong? Obviously, sir. Because unemployment was always there. Yeah, it has been there, sir, but it has increased to a great extent. Everywhere you see, sir, children, students are passing graduation, post-graduation, but the thing is that, sir, the entire system is corrupt. Why the government is not looking forward for, why they're not actually looking at such people, why they're not curbing them, right, when they are just not giving justice to the students, sir. That is the corruption actually, as it moves up to down. See, the number of authorities, they do not know how to set up a question paper, sir. I myself as a teacher, I never made even a single mistake whenever I'm framing an MCQ. Every time it is challenged in the court, is the youth had to go to the court every time. Begum Noor Bano has been a very tall leader of the Congress party, and also she's part of the Rampur Royals. I asked her this question. Let's listen into what she had to say. Begum Noor Bano, thank you very much for speaking to NDTV. मेरा सबसे पहला सवाल, रामपुर के दिल में क्या है? रामपुर के दिल में बेसिकली डेवलपमेंट है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी तो रोज़गार बढ़ेगा तो घर हालात अच्छे होंगे सबके, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम के लिए लोग बाहर भेज सकते हैं, हमारे जो घर में हालात हैं उसे दुरुस्त कर सकते हैं, और सब वैसे ही बुजुर्गों का जैसे इलाज अच्छा हो सकता है. अब अगर रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है. इट इज ऑफन सेड दैट ये जो वोटिंग पैटर्न होता है ना कि मुसलमान इधर जाएगा, जाट इधर जाएगा, उसमें एक फैक्टर हम भूल जाते हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्टिकल स्प्लिट ऑफ 50%. आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाएं, बीजेपी कहती है मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पहली बात ये बता दूं, मुझे ये पसंद नहीं है कि ये उधर जाएगा, हिंदू और मुसलमान उधर जाएगा और ईसाई उधर जाएगा और बुद्धिस्ट उधर जाएगा. ये है डिवीजन कराना. कपड़े को लेकर के और यूनिफॉर्म को लेकर कि स्कूल में हिजाब ना पहना जाए, इसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ, लेकिन वो चुनावी मुद्दा बन गया उत्तर प्रदेश में. आपको लगता है ये दुर्भाग्य? ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जिसमें ज्यादा वोट लेने की तरकीबें होती हैं. अब जिसका दिल चाहेगा वो पर्दे में रहेगा, जिसका दिल चाहेगा वो नहीं रहेगा पर्दे में. इसमें किसी, ये सब अपनी चॉइस है. So the BJP has a Hindu candidate from Rampur. His name is Akash Saxena, and taking a cue from the Prime Minister, he too, and his assessment too, is the fact that don't think that Muslim men and Muslim women vote alike. What if Muslim women were to vote for the BJP? Listen into what he had to say. आज मैं तो रामपुर की ही बात करूंगा. रामपुर में अगर देखा जाए तो महिलाएं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, उनको भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो सम्मान और सुरक्षा. Okay, now for an exclusive interview, Azam Khan, the 9-time strongman MLA from Rampur, is in jail, contesting for a 10th term from jail. How will that shape up? Now, managing all this, the prestige, the legacy, is his son, Abdullah Azam Khan. He has his own contest to fight also from Suar, and also manage his father's constituency, Rampur. We spoke to him in an exclusive interview. Let's listen to the excerpts. इस इलाके की राजनीति के एक बड़े चेहरे रहे हैं आजम खान, और इस बार जो मुकाबला हुआ है उसमें एक प्रमुख चेहरा रामपुर और उसके आसपास के इलाके में रहे हैं उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान. हमारे साथ अब्दुल्ला जी हैं. अब्दुल्ला जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत. सबसे पहली बात, ये कैसा है मुकाबला? रामपुर के दिल में क्या है? रामपुर वालों के दिल में आजम साहब हैं, और उन्होंने अपना ये जवाब अभी ईवीएम के जरिए वो दे रहे हैं. जब मतगणना होगी तो आपको इसका एहसास भी होगा, इसका अंदाजा भी होगा. अब्दुल्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बयान सुने होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं रामपुर से, उनका ये कहना है कि अगर कुछ गलत किया है या अपराध किया है तो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ. जैसे कि जब ये आपको याद है हमारे वो इंटरव्यू में आपने ये बोला था कि किताब चोरी का भी आरोप लगाया है, उस पर उन्होंने कहा ये ऐसी वैसी किताब नहीं है,
500 साल पुरानी कुरान चुराई है, उसका आरोप है। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? आप खुद भी जानते हैं जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं और जो इन लोगों ने तमाशा बनाया है शायद सिस्टम का, और मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना पूरा 1 घंटे का किसी दिन एक पूरा स्पेशल एपिसोड बनाएं। मैं आपको सारी FIRs, उनकी कॉपीज़, उनकी चार्जशीट्स कहेंगे तो कॉपी दे दूंगा, आप उसे पढ़िएगा और आप पढ़ने के बाद खुद ही ये कहेंगे कि ये एक मजाक है। मैं अपने बारे में बात करूं और मैं क्यों किताब चोरी करूं, सबसे बड़ा इशू जो है मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैंने फोर्स्ड बर्थ सर्टिफिकेट बना के इलेक्शन लड़ा। 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पुलिस लगा चुकी है मेरे खिलाफ। 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पुलिस आज तक ये नहीं बता सकी कि फर्जी क्या है। मैं बहुत सी बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन लोग भी सब जानते हैं, आप भी सब जानते हैं, और शायद यही एक बीजेपी का न्यू इंडिया है कि 4 किसानों को कुचल देने वाला शख्स 4 महीने में बेल पर आ जाता है। भैंस चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, मुर्गी चोरी, पेड़ चोरी, मिट्टी चोरी, शराब की बोतल चोरी में एक शख्स 2 साल से जेल में है। इन चीज़ों से अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई मैसेज दे रहे हैं किसी को, लोग किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के हों, कहीं पर भी हों, वो इसका अच्छा नहीं मानते। कानून व्यवस्था, जब सरकार बोलती है कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ समाजवादी पार्टी समर्थक जो है जिन्होंने हमसे दौरों में बात की हमने उनसे, उनका ये कहना है कि दरअसल कानून व्यवस्था से वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमने एक समुदाय विशेष के लोगों को सेट कर दिया है, और ये उसको कानून व्यवस्था बोला जाता है। मुझसे भी किसी ने सवाल किया कि साहब कानून व्यवस्था की बात हो रही है कि हमने माफियाओं पर बुलडोजर चला दिए। लखीमपुर में बुलडोजर कहाँ था? अब तो लखीमपुर के लोग छूट कर भी आ गए, अब कहाँ बुलडोजर है? चंदौली में बुलडोजर कहाँ है? बनारस में बुलडोजर कहाँ है? जौनपुर में बुलडोजर कहाँ है? तो मैंने कहा ना, बीजेपी वो बात नहीं करना चाहती जो होनी चाहिए। दो सीटों, 2 चरण के जो मतदान हो गए हैं, उसके हिसाब से अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप रियलिस्टिकली अपने आप को कहां पाते हैं? मैं अपने पुराने जवाब का और कुछ बताना चाहूँगा। मेरे दिल की ख्वाहिश ये है, यामीन मियाँ साहब की जैसे आपने बात करी, मैं खुद ये चाहूँगा कि वो किसी और फील्ड में जुड़ें। अच्छा नहीं लगेगा कि रामपुर की पहचान चाकू से हो। अगर रामपुर की पहचान एजुकेशन से होगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि चाकू छुरी ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है जिससे एक शहर गलत पहचान है। एक गलत पहचान है, और एक गलत पहचान, मैंने कहा ना, बातें बनाने के लोगों को एक इशू या टॉपिक चाहिए। अगर ये शहर अपनी तालीम के लिए जाना जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि रामपुर चाकू के लिए ना पहचाना जाए, रामपुर अपनी एजुकेशन के लिए पहचाना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 2 चरणों पर आपका असेसमेंट? बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं, और जैसे जैसे फेजेस बढ़ते जाएंगे आपको दिखता जाएगा कि नतीजे बहुत हद तक समाजवादी पार्टी के, बहुत ज़्यादा हद तक समाजवादी पार्टी के फेवर में। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। थैंक यू। The BJP does not share the same assessment. They feel that this overconfidence of the Khans, Azam Khan as well as his son Abdullah Azam Khan, will cost them dearly. That's the BJP's assessment. We spoke to Mr. Saxena, you just heard him, and this is what he had to say. Let's now take you to the election-bound state, the other 2 states. One is Goa and the other is Uttarakhand. What is happening right next to the sea? Let's take a look at this presentation. Eco-friendly green booths and all-women pink booths to welcome the Goan voter in this high-stakes battle. The governor was amongst the first to vote. Our election system is perfect, and we are considered as the largest democracy in the world. One thing I studied about Goa, there's no political clashes. The people of Goa are having higher democratic concepts and political concepts.
The stakes are high. In 2017, the BJP got only 13 seats but managed to form a government with smaller parties and later by breaking the Congress. This time too, the Chief Minister is confident, but don't be so sure, says his Congress rival. Yeah, it is definitely I'm confident that we are getting the 22 plus seats in the state of Goa. We are winning with a majority. Definitely all the peoples, they loves me, and whatever the infrastructure development required in the state, in my own constituency, which I had completed, and I'm fully confident I'm winning this election by more than 4,000 margin. The Home Minister coming and campaigning for Chief Minister, that itself proves that he's losing the ground. I don't have to say much. The X factor this time is parties like the Aam Aadmi Party. People want a change from Goa's defection culture, says the Aam Aadmi Party's chief ministerial candidate. Last time people chose Congress here. They defected to BJP. Only one party which has come out in open and given a guarantees, given a vision for Goa is Aam Aadmi Party. So I think people of Goa are coming out with a hope, and that hope is culminating into the number of people who are voting right now. So I think there's going to be a sea change. This is a wave. The voters here want jobs, better roads, a clean Goa and no corruption. The garbage is all over the place and the roads are bad. The potholed roads, everywhere there are potholed roads. Garbage is definitely an issue, dry garbage, and the roads, of course. And apart from that, I think jobs for youth. I think a lot of our youth are jobless. The youth is very highly educated, so they should always opt for jobs which is according to their qualifications, and there should be transparency in this matter. So the main issue right now is the need for a new face. What happens is when the same old politicians are participating for years and years together, there's no new ideas coming in. They just have their egos and attitudes playing in the game, and because of which the progress and development of society doesn't take place. I don't want the country to split. So my vote was accordingly to that intention. And important is also the development of this place. Another important point was corruption. As the sun sets, Goa has voted. In a small state like Goa, the margins between winners and losers is often too small, making it an extremely hard election to predict. Which way have the winds blown? We'll know on the 10th of March. With camera person Sanjay Mandal, this is Rishika Barua in Goa for NDTV. And from the sea to the mountains, the hilly terrain, the rocky terrain of Uttarakhand. How's the politics shaping up there? Let's take a look. Elections in the Himalayan state of Uttarakhand, as challenging as ever. And as always, millions turned out to vote. For election staff, the pandemic was an added challenge to the tough terrain. The Chief Minister, the third time BJP Chief Minister in the last 5 years, is confident that he'll break the jinx of voters changing their government every 5 years and projects his 6-month term as an advantage. हमारा विजन है हमारा कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। नहीं, हम आश्वस्त हैं, अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देके पूरा करेगी। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। ये चुनाव तो आज उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। Both the Chief Minister and his wife, seen wearing their party symbols at the polling booths, brushed aside questions if that this was a violation. ये कंपेनिंग नहीं है, हम लोग हमेशा से ही जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, बूथ में देखते हैं। कंपेनिंग नहीं है, ऐसे ये कंपेनिंग नहीं है, इसमें तो जनता से जो है देखते हैं हम लोग क्या चल रहा है, कितना जो है वोटिंग हुआ है। The people of Uttarakhand have voted for a new government in every 5 years, and as the state went to polls today as well, the main question remained the same, that whether Uttarakhand will get a government that talks and walks the development agenda of the state, which was the very basis for its creation as well. With camera person Pawan Tiwari, I'm Akshay Dongre for NDTV. And that's a wrap in this edition of Election Radar. Tomorrow, a new place in Uttar Pradesh. We'll get you latest updates, more updates, and all the twists and turns of this election from this state. Thank you very much for watching. For tonight, from Osama, Sachin and I, good night and goodbye.